उसके बाद अपना वाला इम्प्लीमेंट यहाँ पे करना है। ठीक तो है, ये वाला ये आ रहा है और ये वाला न्यूमन वाला जो है वो ये आ रहा है। ठीक है, कर देंगे फिर। Which kind of looks similar 13 19 यहाँ पे है 19 13 हाँ सिमिलर ही तो है यार, बस ये है कि दो कम्युनिटीज अलग नहीं हो रही है इस वाले में, गिवन वाले में, इसमें अलग अलग हो जा रही है। या हाँ, तो आई थिंक दिस इज लाइक परफेक्टली फाइन, कोई इशू नहीं होगा इसमें। तो एक तो है ना, यू गाइस कैन डायरेक्टली रेफर टू दिस फाइल जो है ये वाली, और ऑब्वियसली फाइल में थोड़ा थोड़ा अपने अपने हिसाब से ना चेंज नाम कर डाल लेना। देना, हाँ वो नाम तो सारे चेंज कर लेना, थोड़ी एक आध लाइन एक्स्ट्रा यहाँ वहाँ डाल देना, कोई है ना कोई प्रिंट स्टेटमेंट डाल देना यहाँ वहाँ, तो इट्स लाइक कि थोड़ा सा अलग अलग तो लगेगा ही। या थोड़ा ही लगेगा। और हाँ मुझे नहीं लग रहा कि वो कैसे इसको प्लेजराइज करेंगे, क्योंकि 130 लोग एक ही काम अलग अलग कितना ही कोड हो जाएगा। भाई 130 लोग बचे नहीं है अपन, पता है 100 लोग हाँ, बचे हैं शायद से। अच्छा ऐसा है कि अच्छा तभी हाँ इतनी इतनी कम जनता आती है उसमें। अब अगर देखो तो 100 तो मैंने अभी काफी टाइम हो गया 100 देखे ही नहीं। हाँ वही 90 90 85 मैक्सिमम। 90 हाँ 95 ऐसे ही चलता हाँ, है। इतने ही रह जाते हैं ना। हाँ ओ बॉय। तो अब इसमें आई हैव नो आइडिया क्या एक्सप्लेन करना है, बट मशीन लर्निंग वाले का अपन कर सकते हैं अभी पर। या तो मशीन लर्निंग का सर इसको क्वेश्चन छोड़ो नंबर, ना, अभी मशीन लर्निंग पे आते हैं। हाँ तो इसको मैं कर देता हूँ बंद, इसको कर देता हूँ ओपन। मुझे बस 1 मिनट दो, मैं मशीन लर्निंग का वो सबमिट कर दूं। मैं तो ये जो बना रहा हूँ ना अभी ML असाइनमेंट 2 जो लिखा है ये मैंने, हाँ हाँ। मैं यही सबमिट करने वाला हूँ। मैंने अभी किया नहीं है सबमिट। ओ बॉय। 40 मिनट ही है सर। ठीक है 40 मिनट में अपन कंप्लीट कर लेंगे। देखो आई विल बी रेफरिंग टू वो, क्या नाम है भाई, यश भाई का जो असाइनमेंट है ना, उसको रेफर हाँ करके हाँ अपन हाँ करने हाँ, वाले हैं। ठीक है भाई। आज सर ने कहा है कि मोस्टली जैसे असाइनमेंट्स दिए है ना, वैसे हाँ पेपर में एक्सपेक्ट करो, तो इसका ओके। मतलब यही है ना कि असाइनमेंट प्रिपेयर हो गया तो पेपर भी हो ही जाएगा। हाँ वो न्यूमेरिकल, हाँ तो भाई समझ जाओ यश के बाजू में ही बैठना है। वो आपके बाजू में आएंगे सर, यश के बाजू में तो ठीक है। यश यश की बाजू पहले से ही भरी भरी हुई मिलेंगी। हाँ। मैं फिर आशुतोष सर के पास पहुंच जाऊंगा। भाई मैं बता रहा हूँ ना, मेरे आसपास जो बैठने वाले दिल बी वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि न्यूमेरिकल्स मेरे को ना बिल्कुल पसंद नहीं आते। अरे भाई ऐसे ना बोलो। कोई बात नहीं, देखो फिर तो यही बात है, फिर कोई भी 5 नंबर से ज्यादा का नहीं लिख के आएगा। हाँ सब बराबर हो जाएगा। सब B-। सब सब सेम लेवल पे नहीं है भाई, कुछ यही तो बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। मैं तभी तो कह रहा हूँ, अगर ये रूल बॉयज कॉलेज में होता कोई भी 5 नंबर से नहीं लिख के आता ऊपर। हाँ। चलो अपन है ना एक काम करते, क्वेश्चन 1 करते हैं पहले, 3 तो क्वेश्चन है श्योर। ठीक है सर, ठीक है। है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक सेकंड, ये लेफ्ट राइट ठीक है, ये आई थिंक ये सही चल रहा है मैम, है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, लेट्स रेफर टू दैट। डेटा सेट दिया हुआ है अपन को इसमें, x is equals to there is 1, 1, there is 1.5, 2 I think, हाँ there is 3, 4, 3, 4, there is 5, 7, there is 3.5 and 5, और इसके बाद में है 4.5 and 5, 4.5 and 5, इसके बाद में है अपने पास 3.5 and 4.5, थोड़ा कंफर्म कर लेना 3.5 and 4.5, यही यही पॉइंट्स है ना, और इसके बाद में है 6 and 8, है ना। तो ये हमें है ना सेट दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है अपन को, के मींस क्लस्टरिंग करना है विथ लाइक 2 पार्ट्स में करना है, आई थिंक, है ना, क्वेश्चन यही था। हाँ k इज इक्वल्स टू 2 लेकर के चलना है अपन को। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ k इक्वल्स टू 2, तो 2 क्लस्टर्स बनेंगे, इसका मतलब है टू क्रिएट 2 क्लस्टर्स, ठीक है। और फिर इसके बाद में अपन को μ1 μ2 दिया हुआ है, μ1 इक्वल्स टू 1, 1 एंड μ2 इज गिवन एज 5, 7। तो बेसिकली हमें करना क्या है, इन सबको है ना हमें क्लासिफाई करना है क्लोज टू दिस और क्लोज टू दिस, ठीक है, दैट मेक सेंस। वो क्लस्टरिंग का मतलब यही होता है, ठीक।
अब इसके अलावा गिवन और कुछ तो नहीं है, तो अपन डायरेक्टली इटरेशन पे आ जाते हैं। अब 2D ज्योमेट्री किसी को याद है अच्छे से? 2D ज्योमेट्री में, if you guys remember, there is a formula for distance, है ना? तो formula for distance between points, है ना? अच्छा, ये यश ने ऐसे ऐसे नहीं किया है, एक सेकंड होल्ड करना, मैं यश का भी खोल ही लूँ वो, बिकॉज अगर थोड़ा सा शॉर्टर हो उसका, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, मैं यहाँ पे आई विल क्रिएट एवरी सिंगल डिस्टेंस, सारे के सारे पॉइंट्स के निकाल लेंगे। इफ इट इज लाइक दैट तो दैट्स गुड, अदरवाइज कोई और मेथड होगा तो वो यूज कर लेंगे अपन। इसको ओपन ही कर लेता हूँ डायरेक्ट। पर सर डिस्टेंस तो वैसे निकालनी पड़ेगी ना, जैसे वो डी क्या वो कौन सा फॉर्मूला आता है? पाइथागोरस थ्योरम। हाँ वही, जो x1 माइनस म्यू1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस जो भी है, हाँ, तो उससे ही निकलेगी शायद। मैं अच्छा, हाँ यार, ये इसने तो डायरेक्ट वैसे ही निकाला हुआ है ये, है ना? मतलब बैकएंड में वही फॉर्मूला लगाया होगा आई गेस। नहीं, डायरेक्ट ही निकाला है। अच्छा देखो, ये टेबल बनी हुई है ना, दिस टेबल मैं इसको एक मिनट साइड कर दूँ। व्हाट आई विल डू इज की आई विल शो यू विद द फॉर्मूला एज वेल। अगर नहीं तो फिर अपन ना डायरेक्ट म्यू से माइनस कर लेंगे, क्या ही जा रहा है, करना तो वही है वैसे भी अपन को। तो फॉर एग्जांपल डिस्टेंस है, अगर मैं डायरेक्ट इसको डिस्टेंस लिख देता हूँ डी करके, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट वन विच इज गिवन बाय x1 y1, ये है, एंड पॉइंट टू विच इज x2 y2, है ना? ये गिवन, मतलब ये पॉइंट्स हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है रूट ओवर 2D ज्योमेट्री का, जो अपना क्लास 10th का है, आई थिंक 10th में ही था, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, मतलब x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, एंड प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली, है ना? तो इससे अगर अपन देखते हैं, एंड हम डिस्टेंस किससे निकाल रहे हैं, म्यू1 एंड म्यू2 से निकाल रहे हैं, है ना? चलो इसको चालू करते हैं अपन, है ना? तो फॉर पॉइंट वन देख लेते हैं। फॉर पॉइंट वन, व्हाट डू वी हैव पॉइंट वन में? ये अपन को दिया हुआ है, पॉइंट वन क्या था, वन वन है ना? हाँ वन, एक सेकंड कहाँ चला गया, हाँ पॉइंट वन जो दैट इज
होगा सर, श्योरली यही होगा। बस उसने लिखा नहीं है ना। हाँ हाँ तो हाँ, है ना, तो फिर 0.2 के लिए कर देते हैं अपन। आप सारे तो पॉइंट्स ऐसे ही लिख दो ना सर, समझ आई हाँ क्या क्या मेथड है। 0.2। अरे लेकिन सॉल्व मतलब कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा ना अपन को, क्योंकि क्या करें, एक सेकंड होल्ड करना। मैंने तो बिना उसके सबमिट कर दिया सर, अरे ओके, ऐसे ही रैंडम लिख के सबमिट कर दिया। 1.5, 2। ठीक, तो इसके लिए क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम म्यू वन निकालेंगे, विच इज 1 तो दैट विल बी रूट ओवर 1.5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस, सॉरी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर है 0.25 प्लस 1, तो 1.25 रूट ओवर 1.25, तो ये आ जाएगा रूट ओवर 1.25 इक्वल्स टू, दिस शुड कम आउट टू बी 1.1, है ना। और डिस्टेंस फ्रॉम म्यू टू, मेरी राइटिंग और खराब होते जा रही दिन ब दिन। म्यू टू से क्या है अपना ऊपर 5 एंड 7, तो 1.5 लिख देते पहले यहाँ पे, एंड यहाँ पे लिख देते हैं 2 माइनस 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, बीच में प्लस, इसका रूट। तो 1.5 माइनस 5 वुड बी माइनस 3.5 का स्क्वायर, विच कम्स आउट टू बी कितना आएगा, 12.25 आएगा, एंड दिस वन इज 5, तो इक्वल्स टू 12.25 प्लस 25, हाँ क्योंकि 5 है ना, तो दिस कम्स आउट टू बी 37.25 रूट ओवर 37.25, एंड दैट ये कम्स आउट आएगा टू सर बी 6.10। 6.10। ओके, अब कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा है लगता है। मैंने खोला हुआ है सर, खुद से ही ओके कैलकुलेट करा। हाँ, तो अब अपन 4.3 करते हैं, विच इज 3,4, है ना। एंड अपन को करना क्या है, 3 4 यहाँ लिख देते हैं, 3 4 यहाँ लिख देते हैं, -1 -1 -5 -7, इन सबको ब्रैकेट में डाल देते हैं, स्क्वायर 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 प्लस प्लस एंड रूट। So this is from mu1 and this is from mu2, distance ही है ना। तो 3 minus 1 is 2, that comes out to be 4, and nah wait, what, 3 minus 1 is 2, yeah, so square comes out to be 4 and this one comes out to be 3, that comes out to be 9, 4 plus 9 13, so this comes out to be root 13, and which comes out to be 3.6, and this one will also come out to be 2, तो ये हो जाएगा 4, this one will, ये भी 3 का अंतर है, this will also come out to be root 13 equals to 3.6, तो ये आ गया। अब इसमें इशू है कि इसमें आई हैव नो आइडिया किसमें असाइन होना चाहिए, तो अपन है ना एक बार यश की असाइनमेंट देख लेते हैं। 3.6 एंड 3.6 दोनों में ही है, तो उसने K1 में है ना इसको असाइन कर दिया है, तो आई एम गेसिंग इट डजंट मैटर किसमें असाइन करोगे, बट K1 में असाइन कर दिया उसने, है ना। तो अच्छा ये वाले को भी तो असाइन करना, तो ऊपर वाले को, ये किस में आ रहा है 1.1 और 6, तो ये K1 में आ जाएगा, देयरफॉर असाइन टू K1, है ना। एंड सिमिलरली यहाँ पे since these are equal, equidistant, it does not matter where we assign it. ठीक है, तो इट कैन, बिकॉज इट कैन गो ईदर वे, तो हम इसको असाइन कर दे रहे हैं, देयरफॉर असाइनिंग इट टू K1, है ना। देयर इज नो रीजन कि अपन K2 में नहीं जा सकते, इसको K1 K2 जिसमें असाइन करना है कर लो, देयर इज नो इशू, है ना। अब इसके बाद में क्या है, अपना नेक्स्ट पॉइंट है 5 एंड 7, तो 4.5 एंड 7 फ्रॉम mu1, ये वाला जो है सिंपली हो जाएगा 5 minus 1 एंड 7 minus 1 का स्क्वायर
and इनका plus. So 5 minus 1 is 4 and this is 6. That will come out to be 16 plus 36, again 52 I think. So that is equals to root 52. And that is equals to 7.2. And from mu2, क्योंकि same point है 5 7, तो 5 minus 5 का square plus 7 minus 7 का square root, that comes out to be 0. So this has to be assigned to k2. Therefore assigned to k2. ठीक है ये, है ना? Make sense so far? 5 7 हो गया, अपन को 3.55 4.55 करना है, 3.5 4.5 6 और 8 करना है. बहुत सारे हैं यार ये तो पॉइंट्स. इमेजिन पेपर में कितना टाइम लग जाएगा. 3.5 and 5. I think अपने कैलकुलेटर जो है ना, that might have a direct function to find the distance between points. Not sure exactly होगा कि नहीं होगा, but होना चाहिए कहीं. तो from mu1, that is 3.5 minus 1 the whole square plus this equal to 5 minus what? 1. So 5 minus 1 the whole square. This comes out to be 2.5, which should come out to be 12.5. And this is 4, so 16 and 12.5. So 16 and 12.5 का, no, actually 1.25 ना, 6.25 आना चाहिए. That will come out to be 22.5. 22.5 the square root, and that is equal to 4.7, something like that. From mu2, we will get it as 3.5 minus 5 ka square plus 5 minus 7 ka square. है ना? So for this one, 0.25 and 4. Wait, what? No, 4.5. Now 3.5 and 4. Yeah, 3.5 minus 5 is 2.25. Okay. So 6.25 root over 6.25, that is 1.25. Is it? No, it's 2.5. I'm like so confused right now. 2.5. Yeah. Okay. Calculator खोल लूँगा अपनी, तो अब गड़बड़ हुआ तो. So for next point, for point 4.5 and 5 I think, right? Yeah. 4.5 and अच्छा हाँ, यहाँ पे assignment भी तो करना है. This is closer to K2, therefore assign to K2. Assign to K2 for point 4.5 comma किसमें जाना है इसको? 5 के साथ ना. हाँ. Next इसमें क्या होगा? From mu1 and यहाँ I'll just write from mu2 as well. Process समझ में आ गई ना तुम लोगों को? Basically just distance निकालना और classify करना, nothing else. तो यहाँ पे 4.5 minus 1 का square plus 5 minus 1 का square, that is 3.5 and 4. So that comes out to be 4.5 minus, that is 12.25 and plus 16. So this comes out to be, I'll just write the answer यहाँ पे 28.25. So that should come out to be 5.3 something. 4 point यहाँ पे 5 minus 5 the square plus 5 minus 7 ka square, that is 2 ka square 4, and 4.5, that is 0.5, 0.25 and 4.25. So that comes out to 2.6 or 2.06. 2.06. Okay. And for the next point, for points 3.5 and 4.5, 3.5 and 4.5. For this one, from okay, assignment as well. So 5.3, 2.5. I keep on forgetting to assign this. Therefore, assign to K2. Assign to K2. Now for this point, let's see. From mu1, from mu2 equals to this question can take like 15-16 minutes, I guess.
3.5 minus 1, 4.5 minus 1, and there is a plus 3.5 minus 5 square, keep on forgetting to square that, and 4.5 minus 7 ka whole square. This should come out to be 3.5 minus 1 is 2.5, and 4.5 minus that is 3.5, and square of 2.5 is going to be 6.25, I think. And 12.25, so that should come out to be 18.5. So root 18.5 equals to 4.3, and root 3.5 1.5, that is going to be 175, and so 225 and 625. Okay, so that should come out to be 8.5, and that is going to be root 2 and 0.5, 2.9 something. There we go. So closer to K2 again, therefore assigned to K2. And finally, I think we have just one more point remaining, that is 6 and 8. Let's move up and check. Yep, 6 and 8. 4.68. 4.6, 8. We have, yeah, from mu1 and from mu2. All right. So from mu1, we basically just have root over 6 minus 1 square, that is 25, plus 8 minus 1 square, that is 49. So that is 25 and 49. That's going to be 74. And root 74 is going to be close to be 6, so 8.6. And this one is going to be 6 minus 5 the square, and 8 minus 7 the square, plus, so that is going to be root 2, I think, and which is 1.414, which is closer. So therefore assigned to K2. So these are all the assignments. Let's write down these clusters. So K1 is equals to 1, 1, 1.5, 2, and 3, 4, and K2 is equals to 5, 7, 3.5, 5, 4.5, 5, 3.5, 4.5, and finally we have 6, 8. So there we go. K1 and K2, both the clusters are done. So mean of points in K1, let's do that. New mu1 for points in K1. So that's what we have to find. These points are these ones. I'll just write it again. 1, 1, 1.5, 2, 3, 4. We take these. And how do you find these? You just basically do 1 plus 1.5 plus 3. So mu1 equals to 1 plus 1.5 plus 3 upon 3, comma 1, which is this one, plus 2 plus 4, so all the y values, plus 2 plus 4 by 3. So we get mu1 as equals to 1.83, comma 2.33. So this is our new mu1. For mu2, mu2 for points in K2, we have these points as a lot of points, 5, 7, comma 3.5, 5, comma 4.5, 5, comma 3.5, 4.5, and 6, 8. So we get mu2 equals to 5 plus 3.5
plus 4.5 plus 3.5 plus 6 upon 1, 2, 3, 4, 5. So upon 5, comma, we get 7, 5, 5, 4.5. Oh, why am I separating them by comma? 7 plus 5 plus 5 plus 4.5 plus 8 upon 5. And I'm not sure why am I putting it in curly bracket, but well, it should be like a normal parenthesis, equals to, this should come out to be 4.5 and this should come out to be 5.9. So this is our new mu2. Now these are the new updated centroids for like mu1 and mu2. And now what we have to do is we have to calculate the next iteration. And let's see. So updated centroid. Oh, so we have to repeat this whole process again, by the way, with new mu1 and new mu2. So all of this calculation has to be repeated again. Make sense? Little bit? Like, can you explain again after solving? I lost the internet connection. Okay, sure, no issue, Harshil. So, yeah. What I feel like I should do at this point is like, let's start iteration 2, do like 1 or 2 of these, and then we just copy from Yash's assignment. Is that acceptable, or should I just solve everything? What do you guys say? Yeah, I think. Okay, so let's go with iteration 2. So let's just make next iteration. So for this one, we have mu1 and mu2 set. So let's just write those down first. The mu1 is going to be, Hi, Ashutosh. hello. Yeah, If yeah. it's possible, can you explain about the SN assignment too, if it's fine for you? Yeah. This is like, I mean, this is assignment 2, by the way. This is ML, I guess. Okay. Oh, She's talking about assignment. SN. Okay, SN assignment. assignment too, Yeah, I'm yeah. talking. I can explain it, yes, obviously, but like most probably after this, because Bhavesh said that ML assignment is kind of Okay, required. okay. Yeah. Please, carry Yeah. forward. Okay. So for the next iteration, yeah, let's write down mu1 and mu2. We'll solve one point and then we'll be like moving on with this question. So mu1 is like 1.83 and 2.33. अब तो calculator लगना ही लगना है. We need calculator इसके बाद. And mu2 is equals to 4.5 and 5.9. So that is the other point. Now same process, distance between these, all of these points over here. So let's quickly write down the first point, which is 1, 1. So for point 1, for point 1, we have 1, comma 1. And for that mu1, the distance with mu1 from mu1 equals to, that is going to be root over 1 minus 1.83. And this is going to be, plus, that is going to be 1 minus 2.33. Yeah, that's correct. So for this, I have no idea. I mean, Bhavesh, can you like calculate it using calculator? This is going to be 0.83 ka square, and this is going to be 1.33 ka square. एक मिनट सर. $1.569 आएगा क्या? 1.569. हाँ, मेरे हिसाब से सर. Okay. Oh, I could. Yeah, that is correct actually. That is from like, I just saw Yash ka assignment, and yeah, that is correct. So that is equals to 1.569. हाँ, सही. Yeah, from mu2 equals to, that will be 1 minus 4.5 square plus 1 minus 5.9 square and square root of that. So this is going to be 4.9 square over here plus over here 1 point, that is 3.5.
ये 6.02 समथिंग आना चाहिए. Yeah, that is 6.02 equals to 6.02. So same formula, same thing. And now let's just like classify all of these with like what we have in Yash's assignment. So this is like, therefore we assign to cluster 1. मोस्टली क्वेश्चन 1 हो ही गया इसका मतलब. Yeah. So that is the first point. Similarly, I'll just write, similarly, we have the following. इसमें मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 from mu1, from mu2, and then cluster. So from mu1 we had 0.1, 1.56 and 6.02. For this one 0.46 and 4.92. This one is 2.03 and 2.42. I wonder if they will allow us to use Python like in the exam for this one, because that would make it a lot easier to calculate these things. 5.64 and 1.20, 3.14 and 1.34, 3.77 and 0.90, and then we have 2.73 and 1.72, and then there is 7.03 and 2.58. So those are all of those, and this is in cluster 1, cluster 1, cluster 1, cluster 2, cluster 2, cluster 2, cluster 2, and cluster 2. So we have that. And again, with all of these, we get the same result. Like then mu centroids don't change because the points haven't changed at all between 1 and 2. So these are still in the second one, like this is in cluster 2 still, and these are in the cluster 1 still. So let me like make this like proper 2s. There we go. And because of that, because we are finding the mean using these clusters, same points, so our centroid doesn't change. So basically, therefore, the centroids don't change. Actually, let's write it like this. Since the points are still in the same clusters, therefore the centroids don't change. Okay, that makes sense. So basically our final centroids, so our final centroids are mu1 equals to 1.833, comma 2.33, let's make, yeah, and mu2 equals to 4.5, comma 5.9. So nothing is changing after that. So what was the next part of this same question, by the way? Let me check the question. So what are the final centroids that's done after first iteration updated centroids for 2 clusters? So where is it? Like after updating, these are our new centroids. So let's mark these. This is one of our answers for A, and this is like another answer for A, right? And then we have B like this for B. And then next question was, show that algorithm converges after finite number of iterations. Now I have no idea how to show that actually, but here's the thing. Eventually, let's just think of it this way. For part C, this is part B. And so for part C, let's write it like this. Since at any given cluster, the points can either switch sides or stay in the same cluster.
So what I'm making here is a logical argument, by the way. I think that is how you're supposed to answer it anyway. So since this happens, this means the implication of which is that the points have a finite cluster set to move between, है ना? Adding to that, let's like I'm like making this, adding to that, a point can only switch clusters when it gets close to a centroid. Actually, i.e. I'll just write that, i.e. centroids move, which also means that the points can only fall in one cluster unless there is an exception, cluster, unless the point is equidistant from both or more centroids. But in this case, so let's write that, but in this case, we assign the cluster arbitrarily. Therefore, it is our choice to make this converge in this case, in this specific case. So what will happen is, even if there is an equidistant point from both the clusters, it is up to you to actually decide if it will go into cluster 1 or cluster 2. In that case, it is up to you if you want to like end up converging that or not. Because in the end, if you like keep on switching that one equidistant point between both the clusters, in that case, what will happen is it will like, once it will like go into the other cluster, and the next time it will still be equidistant, so you can like switch it back to the next cluster and it won't ever converge. But in this case, if you want it to converge, then it will converge. Otherwise, it is always going to converge within like a few iterations. So yeah, that's pretty much it. Like that is question 1. I hope that makes sense, by the way. Made any like sense? Like this whole argument? हाँ सर सही है. Okay. So the next question is, why is he like questioning? He's in question 3. Okay, then question 2. Okay. Verify the hyperplane. Okay, so primarily this is the SVM, support vector machine question, the question number 2. So you have to basically just find, again, this is like basic 2D geometry. I'm like, sorry. This is supposed to be like class 10 stuff. So let's start with question 2. हाँ सर, ये seriously easy था. Like एक बार solution पढ़ा तो समझ आ गया इसको कि क्या किया है इसमें. Yeah. 1 second. Let me open the actual assignment and copy the. It's in Classroom, right? हाँ सर, हाँ. Okay. So classroom.google.com. There we go. Let's quickly open that. आपका submission तो late हो गया सर, 12 तो बज गए. ना, बट वो कोई इशू नहीं. क्या ही करेंगे, तो एक थोड़ा सा लेट हो गया तो हो गया, क्या करें. क्लास वर्क, यस. असाइनमेंट 2. ये असाइनमेंट 2 मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि सबमिट नहीं करने देगा? नो आइडिया सर, मैं तो इसलिए सेफ जोन में सुबह ही कर दिया था. हाँ,
solution देख के. So verify whether the hyperplane shown in plot 2 is correctly elastical. आशुतोष भाई, अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं है ना, कर लो. कभी कभी तो वैसे तो हो जाता है नॉर्मली, लेकिन कभी कभार हो जाता है बंद. एक Bro, चीज. the issue is मेल listen, डालना पड़ेगा वरना. bro, listen, ये जो है ना यही मेरा असाइनमेंट है. अच्छा, यही. हाँ. तो फिर कर ही लो भाई साहब. Basically I'm solving it and you guys are just looking at it. ओके. ओके, तो मैं ना इसको कॉपी करता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द हाइपर प्लेन यहाँ पे जो हम ले रहे हैं, सी इसके लिए थोड़ा सा ना वो एसवीएम तो सीखना ही पड़ेगा. वेट, व्हाट हैपेंड? ओके, देयर वी गो. तो एसवीएम प्राइमरीली होता क्या है एंड व्हाट इज हाइपर प्लेन? द थिंग इज ना, यहाँ पे क्लोजेस्ट पॉइंट्स है, जैसे दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज वेरी क्लोज टू दिस पॉइंट. आर दीज लाइक इक्विडिस्टेंट, लाइक ऑल थ्री ऑफ these? Hyperplane. Yeah, this hyperplane is pretty good actually in that case. Let me actually give me a second. Where was that? Is it still? Yeah, it's over here. Okay, there we go. ये तो कोई नहीं हो रहा. एक सेकेंड. ओके, ये तो कॉपी हो गया. सो इसमें देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है ना. कहाँ चला गया? ये है. First problem is identify the equation of the hyperplane from plot 2, which is kind of easy to do. We can just open like Desmos calculator and just do that. Y is equals to x 0.5x, no, minus x, nah. Straight line कैसे? X equals to y won't be a straight line. X is equals to 2. Oh, x is equals to 2 ही तो है. I think that is the, yeah, that is literally the equation for that line. So if you look at this, that is x is equals to 2. That is a line. So identify the equation of hyperplane from plot 2, which is like kind of easy to do. And check the classification of each data point from plot 1 using the hyperplane equation, which, okay. Confirm if the hyperplane correctly separates positive and negative points as shown in the plots. Provide a detailed explanation of how hyperplane equations separate the data points and show whether all data points are correctly classified and their labels. That is kind of like, yes, that is true. That is happening. So let's start with this. It is going to be easy. Let's do the A point. After we do it this way, like we'll just, so the line appears to be vertical, which WHICH is given by x is equals to a constant. Here the intercept is at 2. Therefore x is equals to 2 is the equation. That was the easy part. Now we have to check the classification for the part B. To check the classification, we divide the plot into two parts, which is going to be left and right. X is less than 2 and right, where x is greater than 2. Make sense?
our points are going to be basically 3, 1, 3, minus. So that's 3, 1. X is equals to 3, which is right. Then 3 minus 1, where x is equals to 3. This is also right, because it's falling like over x is over like 2, greater than 2. That's why 6, 1, x is equals to 6 goes right. 6, minus 1, x is still equals to 6, that goes right. 1, 0. I'll just write the points for 0, 1, 0, minus 1, minus 1, 0. Just classifying these points. X is equals to 1, x is equals to 0, x is equals to 0, x is equals to minus 1. These are all left of the point of our line. Left, 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 left. Now we just write these as positive and these as negative, which means our classifications are like correct. Therefore, our classifications are correct. Make sense so far to everybody? Because then we have part C. That is pretty much like part B. And part C is confirm the hyperplane, correctly separate the positive and negative. Oh, that is part C. Check the last video, E data point. That is also part C. Wow. Weird. Okay. This whole thing was like part B and C both. So anyway, let's confirm this. The hyperplane is x is equals to 2 and it separates the points as follows. All positive, which is going to be 3, 1, 3, minus 1, 6, 1, and 6, minus 1. All negative. It's going to be 1, 0, 0, 1, 0, minus 1, and minus 1, 0. Thus the hyperplane already classifies them correctly, which is, so I'll just write like, which is correct. Now finally for explanation, again we're writing the same thing like for point B, for point C, and even for the explanation we're literally writing the same thing all over again, because these are all like 3 same statements. So since we write it like this, since all the points given are classified by the given line x is equals to 2 correctly into the pools of negative and positive parts, or parts, or like I don't know how to write that. I'll just write parts correctly. Therefore, this hyperplane
I'll just write x is equals to 2 correctly. Wait, what was to be explained? I'm just going to check that first. Whether all data points are correct. Yeah, these are getting hyperplane equations separate data. Okay. This now I'll have to remove a bit of this, I guess. Therefore has to be removed there, I guess. All the negative points fall on one side of the hyperplane, and literally the same thing with positive points, and positive points fall to the right of the hyperplane, therefore the hyperplane correctly classifies our data, and that's pretty much like question number 2 done. And let's check with like kahan chala gaya? Yes. So question number, I think it's at the end. Yeah. According to plot 2, the line is vertical, x equals to, that's correct. Positively labeled, that's correct. Negatively labeled, that is also correct. Yeah, it's pretty much just this much, I guess. Like there is an explanation. That's what Yash has done as well. So yeah, that is the answer to question number 2. Now let's do question number 3. This one, consider a data set with the following attributes and target variables. Age, income, and purchased what? Let me check. Calculate the entropy of target variable, but what did they purchase? I don't calculate the entropy of each attribute, compute the information gain for each attribute, and compare the information gain to determine the best attribute to split on at the root node of decision tree. Okay. All right. This one's going to be a little bit complex, by the way. So yeah, let's start with this. I'll like copy the data set from here. Copy, and question number 3. Paste it over here. There we go. Question 3. Yeah. So let's calculate the entropy. That's part A, I think. Yeah. So A was calculate the entropy of target variable. So how do we calculate the target variable's entropy? It's given by a formula, which is HS equals to minus sigma pi log base 2 pi. You guys remember this? Like, I mean, it was in Sir taught us this in a class the day he was very annoyed, irritated, I guess. So P denotes proportions, and this is I. So I'll just make it like that. So what is the probability? Let's like find the probability first. So probability is like yes, there are 3 points, and no, there are 2 points, right? Total there are like probability points. Probability points, total 5, out of which 3 are yes and 2 are no. Therefore, probability of yes equals to 3 by 5, and probability of no is equals to 2 by 5.
So let's quickly find the entropy using the formula over here. So H, therefore, HS is equals to minus of 3 by 5 log base 2, 3 by 5 plus 2 by 5 log base 2, 2 by 5, which, what does this come out to be? Can somebody like find this using calculator? मैं जब तक यश वाले में देख लेता हूँ नहीं तो 0.97 something. okay 0.9708. Okay, so this comes out to be तो ये 0.9. तो sort of easy है देखो इसमें वही करना होगा ना फिर हम इसके बी में निकालेंगे एंट्रोपी ऑफ ईच एट्रीब्यूट जैसे एज का और जो भी अगला कॉलम है तो हम हमेशा यूनिकनेस फाउंड करेंगे लाइक एज में तो सारे यूनिक है तो एंट्रोपी 0 हो जाएगी या यंग वाले में क्या है जैसे 0 है बिकॉज एवरीथिंग इज यस. मिडिल एज में क्या है वन वैल्यू इज नो एंट्रोपी लेकिन फिर भी सेम है तो इट विल आल्सो कम आउट टू बी 0. ओल्ड वाले में जो है देयर इज अ नो एंड अ यस. तो एंट्रोपी कैलकुलेट यूजिंग द सेम फार्मूला जो ऊपर दिया हुआ है ना उसी से होगा. इनकम एट्रीब्यूट हाँ मतलब सेम फॉर्म. उसमें क्या होगा कि 1/2 है 1/2 log base 2 1/2 हो जाएगा माइनस का. अच्छा बेस्ड ऑन द लाइक जो भी हमारे पास कॉलम के अंदर हाँ. वैल्यू है उसके बेसिस पे एंट्रोपी कैलकुलेट होगी. हाँ ठीक है सर ठीक है ना. फिर इनकम एट्रीब्यूट का क्या होगा हाई इनकम में दोनों वैल्यूज यस है तो वो 0 हो जाएगा. मीडियम में दो वैल्यूज है एक यस है और एक नो है तो अगेन 1/2 log base 2 1/2 हो जाएगा. तो हाई में तो 2 है ना सर तो 2/2 माइनस 0/2 है ना 0/2 और -0 होगा तो वो यस ही मतलब इट विल बी लाइक नहीं हाई में तो 0 ही हो जाएगी ना एंट्रोपी टोटल मिला के. क्यों अच्छा हाँ हाँ 0 9 है हाँ ठीक क्योंकि है दोनों सेम है ना. हाँ प्योर स्प्लिट होगा राइट हाँ बेसिकली क्या है ना कि द मोमेंट ये जो डेटा है अपना इसलिए मैं जूम इन कर देता हूँ. ये जो डेटा है ना अपना जैसे हाई वाले में एक ये है और एक ये है दोनों सेम डेटा दे रहा है अपन को हाँ है ना. तो जहाँ पे डेटा सेम है अपने पास जो एक्सटर्नल फीचर जो हम देख रहे हैं तो वहाँ पे एंट्रोपी देयर इज नो चेंज पॉसिबिलिटी नहीं चेंज होने की. तो तो दैट लो भी 0 ही होगा इंडेफिनेटली फिर लो भी 0 ही होगा. हाँ क्योंकि एक ही वैल्यू होगा नो एक ही वैल्यू है देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू चेंज मीडियम पॉसिबिलिटी. पे कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे हाँ है ना. और सर एज के केस में सारी यूनिक है तो 0 ही आएगी ऑब्वियसली नहीं तो एज में अपन क्या कर रहे हैं कि यंग मिडिल एज और ओल्ड में डिवाइड कर सकते हैं अपन इसे. बट हाँ 45 35 25 सब 30 यूनिक है सर सब हाँ यार यूनिक वो तो 0 ही आएंगी सबकी सब. शॉर्ट है फिर तो ये ठीक है सर हाँ ठीक है समझ आ गया मुझे सब ठीक 0 है आएंगे है ना सब हाँ यूनिक है. फिर इंफॉर्मेशन ये निकालना है भाई एंट्रोपी ऑफ टारगेट माइनस वेटेड एंट्रोपी ऑफ एट्रीब्यूट इनकम और एट्रीब्यूट एज एच एस माइनस सिग्मा ऑफ एस वी अपॉन मतलब एस एंड एच एस वी. तो इसका मैं बता दे रहा है ना. नहीं ठीक है सर सॉल्व करते हैं लाइक असाइनमेंट भी हो जाएगा आपका पूरा करते हैं हाँ तो ये तो हो गया ए एंड देन देयर इज बी. तो एंट्रोपी फॉर ईच एट्रीब्यूट व्हेन इट कम्स फॉर एज निकाल लेते हैं अपन. यहाँ पे अपन बस डायरेक्ट लिख देते हैं सिंस ईच ये सी एच अरे ई अरे यार दो बार ही लिख दिया मैंने. ईच डेटा पॉइंट in age only appears once and has unique feature each. Therefore, entropy for each data point in age will come out to be 0 unless clustered together.
इसको देख लेते हैं यश ने कैसे लिखा है। एज डेटा सेट 3/2, ये तो सही आया है। फॉर एज डेटा पॉइंट्स आर दैट सिंस ऑल पॉइंट्स, हाँ सेम चीज लिखी हुई है ना, तो एंट्रोपी देयरफॉर एंट्रोपी इज 0 फॉर एज equals to 0. When it comes to income, let's make it income का। तो इनकम में क्या है, हाई लो एंड मीडियम है, तो अपन हाई में लिख देते हैं। टू ईयर्स 0 नो, therefore entropy is 0. Since यहाँ लिख भी देते हैं, since there is no possibility to change, there is no possibility to change, है ना। और हाई के बाद में अपन लिख देते हैं मीडियम, तो 1 yes 1 no है, 1 yes एंड 1 no, तो इसमें क्या होगा, एंट्रोपी 1 आ जाएगी, लेकिन मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ना, तो एंट्रोपी बट कैलकुलेशन सेम फॉर्मूले से ही होगा, है ना। एंड देन देयर इज लो इनकम का, इसमें क्या है, देयर इज ओनली, कहाँ चला गया लो इनकम वाला, ये है एक ही है ना, सिंगल डेटा पॉइंट है, 1 yes 0 no, एंट्रोपी equals to 0. No, since there is no possibility for change, since there is no possibility for change, है ना, ये हो गया। बट अगर इसका हमें ओवरऑल निकालना है, अब ऊपर वाला जो है वो ओवरऑल भी जो है, क्योंकि तीनों ही जीरो आ रहे हैं, मतलब एज के सब जीरो ही आ रहे हैं, तो इन दी एंड ना एज का ओवरऑल भी जो है दैट विल कम आउट टू बी 0, बट यश ने इसमें ओवरऑल निकाला है तो इट्स 0.4 इस वाले में, बट ओवरऑल निकालना कहाँ है, क्यों है, अपन को निकालना ही नहीं है वो, तो अब तो नेक्स्ट इज लाइक इंफॉर्मेशन गेन, आई एम लाइक स्किपिंग द इंफॉर्मेशन गेन में तो जरूरत पड़ेगी ना, एंट्रोपी ऑफ टारगेट माइनस वेटेड एंट्रोपी ऑफ एट्रीब्यूट। हाँ जरूरत तो पड़ेगी, तो एंट्रोपी ऑफ इनकम तो निकालना पड़ेगा हमें, एक वेरिएबल के लिए निकालना पड़े चाहे। तो एक काम करते हैं ना, वो अपन पार्ट सी में ही निकाल देते हैं। हाँ परफेक्ट क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ क्वेश्चन पार्ट सी है ना। हाँ तो अपन एंट्रोपी ऑफ ये निकाल लेते पहले, एज यहाँ पे, तो इसके लिए क्या होगा हमारा 1/5 into 0 plus 1/5 into 0 plus 1/5 into 0, क्योंकि दैट इज लाइक 1/5 into log base to 1/5, नहीं 0 ही तो रहेगा वो, है ना, 1/5 तो प्रोबेबिलिटी बस है उसकी, प्लस 1/5 into 0, so that is 4 and plus 1/5 into 0, so this comes out to be 0, इसको ऐसे लिख दे रहा, otherwise marks ना कटे हैं। For income similarly we will have 2/5, let's make it income वाला, तो इसमें क्या होगा 2/5 into 0 plus 1/5 into 0 plus 2/5 into 0, 1 आएगा यहाँ पे 2/5। अच्छा, this formula has to be written यहाँ पे, फिर अभी ध्यान गया मेरा इस पे, तो I'll just write this formula actually मैं, ये तो वो वाला फॉर्मूला है ना अपना जो पिछले साल अपन ने पिछले ट्राइमेस्टर में पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग, पिछले सेमेस्टर वाला तो क्या ही बोल रहे हैं। अच्छा उसमें एंट्रोपी, सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग मल्टीप्लाइड बाय एंट्रोपी ऑफ दैट इवेंट, और उसका सम है बस ये, है ना। दिस पार्ट इज लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड दिस पार्ट इज एंट्रोपी ऑफ दैट इवेंट, है ना। दिस वन कम्स आउट टू बी 0.4। अब इंफॉर्मेशन गेन का जो फॉर्मूला है, वेटेड एंट्रोपी फॉर ईच एट्रीब्यूट
सम इंफॉर्मेशन गेन का फॉर्मूला जो है दैट इज टारगेट का एंट्रोपी माइनस सम ऑफ, यहाँ पे आएगा भी कि नहीं आएगा, वेटेड एंट्रोपी ऑफ ईच एट्रीब्यूट। ईच एट्रीब्यूट है ना, तो ये हो गया। तो इंफॉर्मेशन गेन का क्या है, लेट्स सी। इंफॉर्मेशन, अरे यार इसको मैं ऐसे लिख दे रहा, इससे अच्छा तो IG for age equals to H purchased minus 0, which is equals to 0.9708 minus 0 equals to 0.9708. That is information gain for age. Or information gain for income, that is equals to H purchased. Minus 0.4, so that will come out to be 0.5708. 0.5708. So that is the other answer. So because information ये तो हो ही गया है वैसे। इंफॉर्मेशन एज का ज्यादा है, इंफॉर्मेशन गेन, तो बेसिकली वही बेस्ट एट्रीब्यूट होगा। हाँ, so बस for ये लिख दो। confusion, both बस age है। and income है नहीं, लेकिन but they have equal information as well ना, तो either age or information तो दो। हाँ ठीक है, एज का तो नहीं आया, हाँ ठीक है, एज का 0 है हाँ, and this one's come out, हाँ ठीक। तो इसलिए इसका गेन ज्यादा हुआ। हाँ okay, so this is basically like, now this is one part where I'm like I guess you can say very weak with like since age has higher information, it will be used best attribute for splitting. Age will be the best attribute, but age is the best attribute क्योंकि there is more gain. But what is the reason behind that? Just ये वाली क्लास मैंने ना आधी अटेंड की थी सर की। Anyway, हमें तो समझ ही नहीं आता जो पढ़ाते हैं वो। नहीं उस दिन वो कुछ ज़्यादा इरिटेटेड थे ना, इसलिए आई वाज लाइक कि थोड़ी देर बाद आई लेफ्ट द क्लास। चलो तो मैं ना ये वाली लाइन तो यहीं से कॉपी कर दे रहा है ना। ठीक है सर। सर As, बस यही था आज का डिस्कशन, लाइक हो गया ना आज का। तो ये तो हो गया है, इसके अलावा ना एक चीज़ और है, वो SPM कराना था एक्चुअली में, बट कल करवाते हैं सर, कोई है भी नहीं आज। तो अभी कल ही करा। दिमाग भी काम नहीं कर रहा, छोड़ो। हाँ, तो मैं ये करके ना सबमिट कर दे रहा पहले तो। ठीक है सर, मैं ड्रॉप ऑफ करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ठीक है अर्शद भाई, थैंक यू। बाय ओके, मेट भाई, बाय बाय। द बेस्ट एट्रीब्यूट। ओके चलो फिर है ना, मैं इसको सेव कर देता हूँ। एक्सपोर्ट, अरे ये नहीं, अरे शिट, कलर तो उसमें चला गया। फाइल एक्सपोर्ट PDF डेस्कटॉप, हाँ ML असाइनमेंट 2 सेव, तो ये हो गया सेव, दैट इज ML असाइनमेंट 2। राइटिंग तो बहुत कचरा है लेकिन बट आई जस्ट सबमिट दिस। नहीं ये है क्लास वर्क वाला, यहाँ पे सबमिट करना है।